पेटेंट का। देन आगे जाके मुझको मेरा उस पर क्लेम नहीं रहेगा। I will not be having any claim over that patent. Why? Because I have already sold out. उसमें agreement बना दी जाती है that this one has been sold out to particular for particular consideration. Consideration का मतलब होता है पैसा। तो person who is an assigning legal representative of the first and two अभी legal heirs of the first, अगर मान लो legal heirs की बात जब आती है, मैंने कुछ mention की है, then thereafter I got I got pass the way. मेरे मरने के बाद कोई claiming my legal heirs. मान लो किसी ने इन्वेंट किया, after his demise, his legal heirs can claim that invention, that patent. तो यहाँ पे rights, inherent rights कहाँ से आता है? तो one who is inventor, thereafter उसके demise के बाद उसके legal heirs के उसको claim कर सकते हैं। अभी इसके लिए ऑफिसेस कहाँ हैं? कहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो? तो likewise patent offices हैं in दिल्ली and स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल दिस पेटेंट ऑफिस मुंबई में भी है। यहाँ पे अगर रजिस्टर करना है तो ऑनलाइन साइट है, उस साइट पे आपको पर्टिकुलर डिजाइन और रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे एंड दैट विल गो टू रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क, ऑनलाइन जाएगा। देन आफ्टर देयर हैज अ पर्टिकुलर प्रोसेस, उसके बाद ये रजिस्टर हो जाता है। तो पर्टिकुलर ऑफिस जो है मुंबई में इसके ये देश में भी कहाँ है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है। तो टर्म्स क्या होगा? अभी मैं शुरुआत में बता रहा था। तो इन स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर आई वाज डिस्कसिंग दिस अबाउट 20 इयर्स द पेटेंट इज रजिस्टर्ड। उसके बाद उसको रिन्यू कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? अभी आप लेट्स से इट इज इन लार्ज पब्लिक इशू के लिए रहेगा तो गवर्नमेंट आपको पेटेंट फर्दर एक्सटेंड नहीं करेगी, बोलेगी आपके बाद लेट पीपल एंजॉय। अगर 20 इयर्स का पेटेंट आपको दे देता है तो व्हाट यू विल बी एंजॉयिंग कमर्शियल गेन। उसको अगर 5 रुपये का प्रोडक्ट है उसको आप 500 रुपये की प्रोडक्ट करके आप बेच सकते हो। बट आफ्टर 20 इयर्स व्हाट गवर्नमेंट विल से लाइक नाउ आफ्टर 20 इयर्स यू हैव हैड मच कमर्शियल गेन, now let public enjoy, it should be issued in public interest. So then thereafter government will not issue further extension for particular patent. अभी फाइलिंग के लिए जो पैसे फीस है एमएसएमई के लिए, कंपनी के लिए, एमएसएमई तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब आप पंडरपुर में, शोलापुर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट इज समथिंग व्हाट अबाउट 50 CR से 100 CR के आजू-बाजू में आता है, दैट इज समथिंग व्हाट एमएसएमई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं दैट इज एमएसएमई एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होते हैं व्हिच हैज अ फाइलमस कॉर्पस और फंड, इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है इसमें की स्टार्टिंग विद द CR बट जो टर्न अराउंड होता है उसका मोर देन 100 CR तक भी आता है उसका। सो दैट इज समथिंग प्राइवेट कंपनीज। जो प्राइवेट कंपनीज में बहुत सारे इश्यूज हैं, LLPs हैं, लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनरशिप होते हैं जहाँ पे पार्टनरशिप एक जाने के बाद कोई दूसरा भी आ सकता है। लाइक कंपनी का अलग से ये फंडा है, इंडिविजुअल भी रजिस्टर कर सकते हो, आप अकेले भी रजिस्टर कर सकते हो विदाउट अ कंपनी, विदाउट एनी एमएसएमई, इंडिविजुअल ओनर यू कैन रजिस्टर। अपोजिशन, अभी मान लो यू हैव पेटेंट, you have a particular invention and you like to register it with the register of the patent and you filed your patent application with the register. उसके होने के बाद वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है that will flash over the side. Likewise, if somebody having an objection, मान लो पर्टिकुलर कंपनी की कार की मैंने इन्वेंशन की बात, डिजाइन की बात कर रहा था, या फिर मान लो एक ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क लाइक पार्ले जी का हमने एग्जांपल दिया था, पार्ले जी का लाइकवाइज कोई भी XYZ कोई भी कंपनी का नाम हो, अभी बताओ कल परसों की न्यूज़ है, अभी देश में क्या चल रहा है, वहाँ का टाइटल क्या है, ऑपरेशन सिंदूर
बारे में कुछ सुना है आपने? क्या सुना है? रिगार्डिंग दिस आस्पेक्ट, पेटेंट के लिए कुछ सुना है? There are multiple companies, more than 100 companies who has applied for Operation Sindoor's name. इसके कॉपीराइट लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है. You just Google it here itself. One of the companies, Reliance has applied for copyrights for Operation Sindoor. Looking at importance of the name, importance of the term, importance of the word, importance of the design. अगर सिंदूर जो अभी हम सोशल मीडिया में जो देखते हैं या फिर गवर्नमेंट साइंस में जो ऑपरेशन सिंदूर की जो डिजाइन है, जो पिक्चर उसमें वो के बदले में सिंदूर लगाया हुआ है. It is very appealing that Sindoor itself defines what does it mean. So likewise, companies have applied for copyrights. वहाँ पे उसमें ट्रेडमार्क लेने के कुछ ने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया हुआ है, कुछ ने कॉपीराइट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है. Why? Because लॉ क्या होता है, पेटेंट में क्या होता है या फिर आईपीआर में क्या होता है? The first one who applies, मान लो एक इन्वेंशन है लेकिन उसके बारे में किसी ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी अर्जी नहीं की है और किसी ने बाद में उसको देख लिया और उसने अप्लाई कर दिया फर्स्ट टाइम. दैट इन्वेंशन, मान लो मेरे पास वो इन्वेंशन है, पिछले 5-10 साल से वो इन्वेंशन मेरे पास है, बट आई हैवंट रजिस्टर्ड. अ बिजनेस मैन गॉट टू नो दैट एंड इट्स इंपॉर्टेंट. व्हाट ही विल डू? ही विल अप्लाई टू रजिस्टर फर्स्ट. तो चुरा के उसने अप्लाई कर दिया, लेकिन वह क्या, वहाँ पे he is the first person to apply. So that is his benefit because this person, this is unregistered and he do not have any legal production. To ascertain the production, that businessman applies that particular trademark, patent or say copyright with the registrar and he got registered. तो इसका 10 साल का मेहनत गया पानी में. For that purpose, whenever you have an invention, whenever you have a product to register, you must get registered first. तो स्टार्टअप से पहले आपका नाम, आपका प्रोडक्ट जो भी होता है, उसके लिए रजिस्टर आपको करनी पड़ती है. Just because other people should not have a commercial gain. मान लो आपका प्रोडक्ट सेल होने चला और it goes into hundreds of crores. But till then you did not register any product, any design, and that design has been stolen by somebody else. That in legal language which we call infringement. अगर उसको किसी ने चुरा लिया, and then what he do? If he is the sharp one, brilliant one, he will go to register first. उससे उसको बेनिफिट मिलेगा कि पहली बार उसने रजिस्टर किया, इसलिए उसके नाम से वो रजिस्टर इशू हो जाएगा. बट पिछले 10 साल से ये उसके नाम से कमा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, मेरा ओरिजिनल ब्रांड है, मैंने रजिस्टर नहीं किया, लेकिन बाद में आकर इसने उसको रजिस्टर किया, उसका हो गया. व्हाट द इशू मार्केट में? दिस इज समथिंग व्हाट हैपनिंग अलोंग विद दिस डिजिटल का जो आता है एज ऑफ नाउ. मार्केट इज डिजिटलाइज. जब आईटी की बात आती है आगे जाके, अपोजिशन जो होता है यहाँ पे, आईटी फील्ड अभी है, वी आर इन डिजिटल वर्ल्ड. डिजिटल वर्ल्ड में क्या होगा कि ऑनलाइन चुराई जाती है, ऑनलाइन डेटा चुराई जाती है, ऑनलाइन ट्रेडमार्क चुराए जाते हैं, ऑनलाइन पेटेंट भी चुराए जाते हैं, ऑनलाइन कॉपीराइट भी चुराए जाते हैं. सो हाउ विल बी फाइटिंग विद ऑल दिस पीपल? मेरे पास एक नागपुर की सोलापुर की केस है जो विच इज रजिस्टर्ड नासिक डिस्ट्रिक्ट में. या सोलापुर का एक बंदे ने क्या किया था, नासिक का एक प्रोडक्ट, एक एजुकेशन प्रोडक्ट है, उसने ब्रांड चुरा लिया, ब्रांड का नाम चुरा लिया, उस ब्रांड के नाम से सोलापुर में वो सेल कर रहा था. तो लेटर ऑन ऑनलाइन सब कुछ फेसबुक पे उसके ऐड उसने भेज रहे थे, उसके नाम से
कर दिया था, तो बाद में उसको ट्रेडमार्क की नोटिस उसको आ गई, क्या करके दैट यू हैव इनफ्रीज्ड, you have stolen, in other language if I say you have stolen our product and my product value is so and so, and out of you have generated business along nearby Solapur and Solapur other district so many lakhs of rupees, so इसको इतने में से उसके अगेंस्ट अराउंड 2 CR की केस पड़ी है, 2 CR की लॉस उसने जनरेट किया, उस कंपनी ने जनरेट किया, लेकिन 2 CR की क्लेम उन्होंने नासिक कोर्ट में ट्रेडमार्क सूट डाली है इस केस के अगेंस्ट। लाइकवाइज द इम्पोर्टेंस, दिस इज अपोजिशन वहाँ पे आता है, तो वहाँ पे आप यू कैन क्लेम अगर ओनली व्हेन इट इज रजिस्टर्ड विद ट्रेडमार्क रजिस्टर, अगर अदरवाइज you will not having any legal rights for that product design or trademark, okay। अगर ये प्रोडक्ट जब भी रजिस्टर होना होता है तब भी क्या होता है, प्रोसेस एक होता है आपका लोगोस जो रजिस्टर होते रहते हैं, जब ऑब्जेक्शन लिया जाता है तो लाइकवाइज कोई प्रोडक्ट इससे पहले रजिस्टर्ड है या फिर किसी का प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उनसे ऑब्जेक्शन लिया जाता है, देन ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद आपको वो सर्टिफिकेशन इशू हो जाता है। रिवोकेशन कब होता है? दिस इज ऑल प्रोडक्ट कैन बी revoked at any point of time similar ground as applicable in the case of opposition। जब मान लो रजिस्टर दे दिया, रजिस्टर हो गया, लेकिन दैट सर्टन पेटेंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड बाय डिफॉल्ट, इससे पहले रजिस्टर हुआ होगा और बाद में रजिस्टर किसी ने और करा, किसी ने कर ली, मीनवाइल उसने उसको ऑब्जेक्ट किया नहीं था, तो बाद में जब भी आप उसको ऑब्जेक्शन लेते हैं दैट कैन बी रिवोक्ड। What is not patentable? An invention contrary to well-established natural law, for example, perpetual motion, gravitation forces. An invention contrary to laws of public health or morality, for example, toxic drugs or food item drinks, mere discovery, scientific principles or formulations of an abstract theories or mere discovery of any living things, non-living substance in nature। कौन से पेटेंटेबल नहीं है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पे अगर कोई गुड्स है जो which is useful in general and this is which is ethical morality के against है या फिर public health के against है, that will not be you will be not registering that particular patent। ये continued है, this is not so much important in this case। अभी जो मेन हिस्सा है साइबर क्राइम, so meanwhile we are discussing, this is my core area where cyber, what is cyber crime। अभी हमने पेटेंट के बारे में बात किया, so we are just discussing So now you have a startup, you got registered your brand, your product with copyrights under copyrights or patent act, register करवा लिया, then you have signed particular name XYZ, and उसके बाद क्या होगा, you start your business। meanwhile क्या होगा कि किसी बंदे ने मेरे जैसे कोई साइबर इंश्योरेंस देख रहे हैं, कोई ऐसा है, तो what we will do, we will try to imitate or imitate particular brand in other name। अगर पार्ले जी के बारे में अगर बोल देता है, हाँ जी बोल, कोई सिमिलर ब्रांड अगर निकल जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस ऑल आर नाउ फिजिकल कोई आपसे फाइट नहीं करेगा। रियल क्राइम एंड साइबर क्राइम देयर इज ओनली डिफरेंस, अगर हम
आमने सामने मैं आपको गाली गलौज नहीं देता हूँ, दैट विल अट्रैक्ट एन आईपीसी और बीएनएस अभी की जो है आईपीसी। बट यही बात अगर मैं कोई फेक आइडेंटिटी निकालता हूँ, कोई फेक आईडी निकालता हूँ, आईजी का आईडी निकाल देता हूँ, आई विल क्रिएट एन फेक आईजी आईडी और फेक फेसबुक आईडी where it will be depicting like in the same name। अभी हर्षद के नाम से मैंने कोई अकाउंट निकाल दिया, अकाउंट किसका है? हर्षद का। ऑपरेट कौन कर रहा है? मंजुनाथ कर रहा है। यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है? हर्षद कर रहा है। आपको क्या लगेगा? हर्षद ने मुझे मैसेज किया, हर्षद ने मुझे ऑफिशियल लैंग्वेज में बोल दिया। हर्षद दिस इज नॉट हर्षद बट इट इज एन एग्जांपल, डोंट टेक इट अदरवाइज। सो लाइकवाइज किसी ने मान लो मंजुनाथ ने किसी को फेक अकाउंट में बंद करा दी और फेक अकाउंट के नाम से किसी दूसरे के नाम से मैंने किसी लड़की को चेक करा, ओके, किसी लड़की को चेक करा, उसको प्रपोज करा, बट व्हाट दैट गर्ल विल फील, व्हाट दैट गर्ल विल फील, हु इज प्रपोजिंग हिम, हु इज प्रपोजिंग हर, दैट पर्टिकुलर XYZ person, okay, but on the contrary who is doing that? Manjunath is doing that, okay। तो यहाँ पे क्या होगा? आजकल के क्राइम जो है it is called cyber war। अभी nobody will come in front of you and say something, and if he is wise he never will come in front of you and fight with you, rather he will go to Facebook social media or say IG where he will be creating a dummy account, a fake account where he will, if he desires to harm you, he will create a fake account in your name also and make a defamation of your name, make a defamation of your photos, he will doctorate your photos also। डॉक्टरेट का मतलब होता है कि अभी deepfake you might have heard, deepfake सचिन तेंदुलकर का हुआ था, कौन वो एक्ट्रेस, उसके फोटोज वंदना, रश्मिका वंदना, deepfake, she was a victim of a deepfake। Some objectionable photos were circulated over social media, which she never did। deepfake का होता है कि आप ओरिजिनली आप वैसे कर रहे हो, वैसे दिखाया जाता है, but she never meant to do that, कभी उसने किया ही नहीं। Likewise that was circulated। अभी जो Y1 होगा, जिसके पास ताकत नहीं होगी, मेरे जैसे के पास ताकत नहीं होगी, तो अगर मुझे किसी को हार्म करना तो what I will do? I will use my mind, I will use my intellectual and create a particular account, fake account in some other name, and will try to bully you in the sense will harass you, will send you particular messages, send you particular official photos of you wherever you, मान लो सिंगल फोटो भी, किसी का सिंगल फोटो भी मिलता है, मैं उसे डाउनलोड कर सकता हूँ, किसी भी जगह में उसे बिठा सकता हूँ। हम व्हाट्सएप में भी कोई बहुत सारे इमेज देखें, है ना। Likewise the cyber crime is real time crime में cyber crime में इतना ही फर्क है, जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आमने सामने गाली गलौज करता हूँ, only is that वहाँ पे cyber crime में आइडेंटिटी नहीं रहेगी, whereas the accused is myself, मैंने कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन identity is somebody else's name, and it is difficult to trace that particular offender accused by the police। पुलिस बहुत बार सर्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। VPN है, VPN से स्पेशल प्रोडक्ट ये है whereby you will be surfing over the net without your identification। IP जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ID होता है, पर्टिकुलर मोबाइल हैविंग एन IP, पर्टिकुलर नंबर हैविंग एन IP, वहाँ पे if you access from this mobile, your mobile, you will be having an IP। if you hit particular site, that site will generate your IP। But to hide that IP, you have particular tools in the cyber world called VPN। जहाँ पे if you enable VPN, that IP will not be traceable। अगर मेरा लोकेशन किसी को अभी पता चल रहा है तो मैं शोलापुर में या फिर मंडोपुर में नहीं, I am somebody else, somewhere else। आपको मेरा लोकेशन फ्रांस में भी दिख सकती है, चाइना में भी दिख सकती है, अदर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज इट कैन बी सीन। मेरी VPN के वो मेरे मोबाइल में VPN एक्टिव होने की वजह से मेरी लोकेशन जो है will be keep fluctuating, keep shifting from here and there। So what advantage that accused will be gaining
out of that VPN, the police, the investigation authority will not be tracing or unable to trace that his location. अगर पुलिस क्या करेंगे, पहले अगर एक अपन रजिस्टर होता है तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो बंदा कहाँ बैठा है, चलो उसको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लोकेशन सर्च करना पड़ेगा। अगर लोकेशन सर्च करना है तो क्या करेंगे, उसका मोबाइल नंबर सर्च पे डाल के ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग में अगर किसी को मेरा लोकेशन दिखाना ही नहीं है तो एक साइबर इंट्रूस क्या करेगा, कोई साइबर ये जो होगा टेक्निक्स जो होगा will keep switching his locations through VPN, और there are n number of ये है applications है where if you activate that application in your mobile, your location will not be traceable to nearby any people unless you share yourself. Likewise, ये cyber crime होते हैं। Likewise, ये IPL के बाबत इसमें भी होता है। तो IPL इन द सेंस आपका जो प्रोडक्ट है, साइट है, वेबसाइट होता है, वेबसाइट पे कोई डिजिटल साइन आपकी होती है, उसको भी हम हैक कर सकते हैं। हैक करने के बाद क्या होगा, we have particular term called data theft. What is data theft? अभी इन सिंपल वर्ड चोरी करना, मैंने इनकी नोट चुरा ली, इनके पेन चुरा लिया, दिस इज समथिंग फिजिकल चोरी। मैंने इनके मोबाइल से इनको बिना बताए कुछ चोरी किया, डेटा थेफ्ट। मान लो अभी आपकी पीसी है, मान लीजिए मेरी पेन यहाँ पे अटकी हुई है, मान लो आपके बंदे ने, आपके फ्रेंड ने मेरे बहुत सारे स्लाइड थे, उस स्लाइड में से कोई स्लाइड उन्होंने चुरा ली, दिस इज डेटा थेफ्ट। इसमें से ये भी पीपीटी विदाउट माय परमिशन, विदाउट माय कंसेंट अगर इसने चुरा लिया, अगर उसने कॉपी पेस्ट किसी में कर दिया, दैट अगेन डेटा थेफ्ट। डेटा थेफ्ट सिंपली receiving your mobile without your consent and transferring particular photos, particular messages from your mobile to my mobile is data theft. Is something what done in larger sense with all sites, all business sites. जो भी मान लो अभी रिलायंस का कोई साइट है, जो का साइट है, या फिर कोई बैंक का साइट है, जिसमें एक बैंक की साइट है, अगर उस बैंक की साइट में हैक करता हूँ तो वहाँ पे you will be having number of ID passwords, number of account numbers, whereby if you steal that one, you will be having commercial gain, you will be having lots of money to steal. So यहाँ पे जो दिया गया है, this is something called definition defined under Information Technology Act. What is data theft? Right? Simplifies to understand, make to understand what other sense it can be said. So data theft इसके बारे में अगर छोटी सी जैसे हमने बताया, मैंने मैडम का मोबाइल चोरी किया तो ये चोरी हो गई, मैडम का डेटा बिना बताया आपके मोबाइल में से किसी ने चोरी कर लिया, डेटा थेफ्ट। अगर स्वेरी का साइट मैंने हैक कर दिया, दैट बिकम्स डेटा थेफ्ट। अगर किसी के व्हाट्सएप में से कोई मैसेज मैंने चुरा लिया तो डेटा थेफ्ट। अगर किसी का यूपीआई से पैसे मैंने चुरा लिया तो डेटा थेफ्ट, बिकॉज दैट इज द डेटा, है ना। लाइकवाइज ये आईपीएल के बारे में बहुत बार डेटा थेफ्ट की बात होती है। डेटा थेफ्ट होता है क्यों, बिकॉज आईपीआर समथिंग व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनीज हैं, उनके साइट्स हैं, साइट्स में से मैंने वो डेटा चुरा लिया, देन व्हाट हैज हैपेंड, कंपनी विल गो टू sue अगेंस्ट मी, कंपनी विल फर्स्ट रजिस्टर केस विद द पुलिस एंड पुलिस उसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करेगा। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, पर्टिकुलर कंपनी ये सीपीयू है, आई विल पुट इन एग्जांपल data.com, a price example we have in Singapore space. We all are affiliated to Singapore space, right? You might be heard of a case with the Singapore space. There were some marks modification in marks, some students marks modification. There was a case in Singapore University in 2022 that some students whose were failed and then got promoted passed by modification in their marks. You might have heard this case or not.
but I have handled this case from the Solapur University. There was a case in Solapur University wherein without their passing, without any writing exam, actually those students were absent in the exam, but they got pass. Okay, and then thereafter when university comes to know that case got raised with the police, and I was handling that case on behalf of university, wherein after cyber forensic report that 2 university officers were interns in that crime, both were arrested. Actually that was operated in the name of वाइस चांसलर. उसको ऐसे दिखाया गया था कि वाइस चांसलर ने उस स्टूडेंट की मार्क्स बढ़ाने के लिए. That were actually operated by the another 2 employees. After cyber forensic report, which we have hard disks, यहाँ पे we called it as digital footprint. Digital footprint का मतलब क्या होता है? मैंने चोरी की है, इसका जो भी ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास रहेगा. मोबाइल चोरी किया, मोबाइल मेरे पास रहता है. जब डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है ना, मैंने अगर चोरी उसमें डिजिटली चोरी कुछ किया तो मैं क्या करूँगा, उसका जो भी डिजिटल फुटप्रिंट होता है ना, लॉक्स वगैरह होता है ना, उसको मैं इरेज कर सकता हूँ. लेकिन उसको हम रिकवर भी कर सकते हैं फॉरेंसिक लैब में. जब ये आर्टिस्ट होता है ना, आर्टिस्ट जब हम फॉरेंसिक लैब भेजते हैं, वहाँ पे फॉरेंसिक लैब में वो सभी डेटा रिकवर कर सकते हैं. You might have heard Sushant Singh's Rajput case, wherein his WhatsApp data were deleted after 2 years that were recorded. Old chats were recorded. वो उसने किसके साथ चैट किया था, क्या उसने बोला था, क्या कुछ नहीं बोला था, उसके साथ किसने क्या कुछ किया था. That all were revealed by cyber forensic report. Likewise, Solapur University, all that around 5 to 6 CPR sent for forensic report. Out of report there were certain logs which have been recorded was originated with 2 officers of the university who were something related to the exam department, and they got arrested. They were behind the bars for around 3 months. Thereafter they got away. For just to quote you an example, data theft, this is something what cyber crime used to be happening. मैंने शुरुआत में बताया था, it was just like very casual manner. मंजुनाथ कर रहा है, लेकिन मंजुनाथ का नाम वहाँ पे होता नहीं, किसी और का नाम अशरफ के नाम से मैंने अकाउंट खोल दिया. अशरफ मैसेज कर रहा है, लेकिन मैसेज कौन कर रहा था? मंजुनाथ कर रहा था. Likewise in Solapur University also it has happened, and it was shown that University Kulguru has done that particular act. But later after the investigation, we got to know that particular 2 employees were involved in that crime. Okay. So likewise, data theft can be happened with. अभी सोलापुर यूनिवर्सिटी का साइट का अभी हैक का मतलब होता है. वहाँ पे वो that was a different scenario. वहाँ पे given particular login ID were created in name of Kulguru and all, and then thereafter they got marks increase, and then students were passed. Then after this all related into the investigation, something that is called data theft. Such crimes used to happen. This is not only the university which has happened. It is happening in Mumbai University also, in Pune University also. In Aurangabad University, I had a case wherein such crimes will happen. Online, ये सभी crimes होते हैं. Now physical form of crime is declining. Online crimes are increasing. Why? Because just to have an advantage of identity theft. Identity theft का क्या आता है यहाँ पे? Identity theft in the sense मंजुनाथ crime कर रहा है, लेकिन किसी और के नाम से काम crime कर रहा है. तो that is something called identity theft. So आपके IPR में जब भी कोई IPR कोई साइट हैक होती है, वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन स्टील किया जाता है, चुरा ली जाती है. So all crimes got registered under IT Information Technology Act, इसके तहत होते हैं. And then again IT Act IPR का जो भी होगा, अगर पेटेंट होगा, पेटेंट एक्ट के तहत वो रजिस्टर होगा, और फिर कॉपीराइट एक्ट के तहत वो क्राइम्स लग जाते हैं.
So likewise, information technology now moving ahead, we have AI, artificial intelligence here. What is artificial intelligence? It is क्या है? Artificial क्या है? Why you call AI? AI का मतलब क्या है? मराठी सांगा. It is another set से आता मराठी से तुम्हाला सांगतो आता मेरे बोल उत्तर कुछ बताऊं बोलो उत्तर कुछ बता क्या होता है why I would say just because उसको it thinks like a human. You have ChatGPT. If you give a input that PPT on intellectual property rights, PPT on Information Technology Act, or PPT on cyber crime, or let's say if you put Advocate Manjuna, if you search, give input Advocate Manjuna, you will be finding n number of information about Advocate Manjuna. So likewise, it acts like a human brain. That's why this is artificial intelligence we named it. So now artificial intelligence IPR के बारे में क्या आएगा? Now this IPR is being upgraded. Okay, IPR will not be depending just on your paperwork. Will be on every site. All goods are being अभी आपके जो कोर्सवेयर है more or less PDF फॉर्म में आ रहे हैं. PDF में शेयर हो रहा है. अभी जो एग्जाम आप फॉर्म भरे हो अब मे बी ऑनलाइन ना एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं कुछ नहीं है ना. Likewise all are being digitalized. So digital जब भी होता है तो then this artificial intelligence will be helping in that sense. Artificial intelligence it gives more accuracy in your work, more efficiency in your work. अभी हम इनको कंप्यूटर में बैठे-बैठे इनपुट दे रहे थे कि पूरा का पूरा टाइप करना है जो हमें पीपीटी चाहिए. अगर मैं ये पीपीटी मुझे टाइप करनी है तो इसके लिए मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे अगर मैं मैन्युअली कर रहा हूँ. तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं यूज़ करता हूँ या फिर ChatGPT यूज़ करता हूँ तो इट विल टेक हार्डली 15-20 मिनट्स टू क्रिएट पर्टिकुलर पीपीटी. बट उसके लिए आपको इनपुट अच्छी तरह से देना आना चाहिए. व्हाट इनपुट सपोज टू बी गिवन, क्या इनपुट क्या वर्डिंग उसे यूज करना है, ये आपको अगर पता चलता है तो इट विल बी मोर एफिशिएंट टू वर्क ऑन ChatGPT. ChatGPT is good but it will not go beyond your mindset. Why? Because unless what input you gives, let's say आपने मंजुना टाइप किया, आपने स्वेरी टाइप कर दिया, आपने डेटा टाइप किया, उसके लिमिटेड ही आपको इंफॉर्मेशन देगा. उसके आगे जाके आपको उसके आगे भी कुछ सोचना है. डेटा टाइप के आगे भी बस कुछ सोचना होता है तो उसके आगे की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी. Only but you should have a knack how to draw the information from the ChatGPT. Then only ChatGPT will be adding in your day-to-day activities. So यहाँ पे ChatGPT यूज करना भी एक टेक्निक है उसके लिए. So यूज करते वक्त there are some keywords how to use it इसके लिए. So if you search on Google, you search on YouTube, you will have a number of ये videos है जहाँ पे you will be having that how to operate ChatGPT. So this is something what we are talking about IT, and this is just bit of overview about IT and all. IT के बारे में आपको कुछ पूछना है, IT के बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. इसके बारे में बहुत कुछ बात कर सकते हैं, दिन भर हम बात कर सकते हैं, लेकिन we have some limited time. इसके लिए आपको कुछ पूछना है. Do you have any query about IPR or IT? Any queries? Otherwise we will be concluding. इसके बाद अभी थोड़ा सा कन्वेंशन है. IT
एक्शन क्या होगा? Raise your hand if your one of your Facebook account has been hacked. किसी के Facebook account से किसी ने पैसे मांगे हैं? Facebook पे आजकल एक ट्रेंड आ रहा है, like will be dummy account, will be what he do, what is modus operandi, he will like to message nearby your friends and he will ask for money to transfer on particular mobile number, and without giving a thought what we do, we transfer money, and then after we go and ask particular person, I have given you this money in your emergency, please pay me back. But originally that person would have not got that money. Now this modus operandi has been well known to everybody. आपने जमा करा हुआ देखा है Netflix पे? That is web series wherein all cyber crime related कैसे किया जाता है? How accounts used to be hacked. Likewise, let's say you have bank account. So what an incident I will share with you, which has happened to me. I was in a court. I got a call from a lady. She was calling me, just sir, ऐसे आपके मोबाइल पे मैंने आपको मैसेज आया, वहाँ पे एक OTP है, वो OTP आपको बताना। I said, why should I say you? Sir, just because your number and my number was same, only last visitor, my last visit is 28 and her last date is 29. See the techniques. What's important? Sir, your last digit is 8 and my last digit is 8. By default, that type gets 8 and that OTP comes to your mobile. Please send that OTP. So then, what she was supposed to do? She was intended to hack my account, my bank account. If I would have shared that OTP with her, my account would have been null, totally empty. So these are some techniques where you used to have tricks like they used to fool you by multiple incidents or multiple tactics, by calling in other name, by calling your friend's name, by calling in any. There are certain the number of techniques by they seduce you, induce you to give you OTP. So likewise, they hack your account and put your money out of your account. अभी हैकिंग के हम बात कर रहे हैं, हैक कैसा होता है? See, honestly, आजकल के मोबाइल में जितने भी आप हैं और मोबाइल से भी हैक, including mine. You install WhatsApp, you install Amazon, you install Flipkart, you install Facebook, you install Insta. While installing, it asks for certain permissions. Asks to access your contact, asks to access your photos, asks to access your camera. है ना? What does it mean? If all these apps ever wants to hack your account or hack your mobile, easily they can. Because we are already permitted to access our camera. अगर मान लो मैंने इसमें किसी ऐप में उसका कैमरा मोड ऑन कर दिया, because we already given access to them, मोड ऑन कर दिया, तो what I am doing right now, they will be able to access that location, that lecture, what I am talking, whatever I am talking here and there, they will be easily accessible. Even might have heard that sometimes your mobile got heat. That time something the recording used to go on in your mobile. So microphones are on always, and whenever microphones are on, your mobile used to get heat. Okay, that time you try to turn off your mobile and switch on again. Restart. Microphone, whenever microphones are on, that all your conversation got stolen from that particular app, and whoever desires to store your that conversation really has that benefit. आपने Alexa सुना होगा? We used to give command to Alexa.
Alexa, play the song. Alexa, call so and so. Alexa, call my boyfriend, call my girlfriend. No? Okay. So Alexa, how does Alexa operates? Alexa में है. Alexa में क्या है? There is a Bluetooth and there is remote operating. There is remote operating memory process है जहाँ पे it do not connects. वहाँ पे अगर दो Alexa रहेंगे, they are not connected to each other. But all this data will be connected to company. वहाँ पे होता है. तो whenever there was a case, you might have heard of or don't know, but there was a murder and it was not having any clues. But the investigation, it has happened in America. This case is not from Mumbai or here. That there was a murder of a lady and there was no clue for the police. And police used to go on investigation, but they were not having any clue of that murder. How the investigation, they were landing in nowhere. So there was a Alexa speaker was lying on the table. Investigation officer got to know that there was an Alexa. So he wrote a mail to the company. Alexa, that so and so whether this recording could be available. So Alexa operates on remote mode. So whether this recording will be available, if we can ascertain particular time period where some people might have come here and there would be a particular sound that so and so while killing them there might be sound. So you might have there was shouting, there might have been weapon sound, no. So initially that company did not allow them to access Alexa, but that FBI went to court and sought a permission from the court to analyze Alexa. Thereby, after analyzing forensic analysis, that FBI got to know that actually Alexa records all recording, entire day recording. Whenever it is on, it records entire day conversation. And meanwhile, that when that crime signals happened, there were 2-3 songs were recorded. And on basis of that sound record, that FBI people able to access to the culprit, who was the accused. And he got arrested, was detained, and even got punished for that. So Alexa and all our mobiles are microphone, and used to record our voice. Your voice record is always already available with the Google. In other terms, if I can say, let's say, let me ask you a question. Who knows you better? Your papa, your friends, your teachers, who knows you better? Who knows you better? Wrong. Wrong. So mobile is wrong. Again. Google knows most of all. You are your mobile forget sometimes. You search something and delete, but you have all recorded to Google because Android is a Google-based operating system. Android किसका है? Google का है. iPhone किसका है? Apple का है. So they have a database wherein all data, logins, your locations.